मृणाल, आपके पास आ जाते हैं। मृणाल, should I call you Vidya? I would love that. Yeah, perfect. So आपके पास you play this very strong female character in this film, which we've seen as a trend over a lot of film choices that you've made, be it Tufan, Super 30, Dhamaka. What is that one character trait that you look for, or what are some things that you look for in the roles that you choose? Well, thank you for asking me that question. And good afternoon, everybody. I'm so happy to see you all again. Thank you. And coming back to your question, well, I think the best part about being an actress is not just being an actress and playing that character, but to be able to play a journalist, to be able to play a dancer, to be able to play a receptionist in this film, working for a hotel. So she has an identity of her own. She's independent and she's able to she's making sure that the family is financially stable. So I feel like there is a evolution as far as writing the characters in terms of Bollywood heroines are concerned. And I would really like to thank Gautam sir for giving me this opportunity because it's such a meaty role and one of the most difficult role that I have played. First of all, to be in front of Shahid, you end up like forgetting your lines. And then you have a scene where you have to slap him. Then you have a scene where you're romancing him. So, it was overwhelming. And yeah, I must say that all the wives are not similar. इस रूम में I'm sure आप मुझसे you will agree with me कि हर एक के वाइफ में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है. So I'm happy that I am contributing and it's such a great role. And next time I'm sure कि मुझे ये questions नहीं मिलेंगे कि मृणाल you always play supportive roles. इस film में क्या हुआ? No, at all. So this is a very special film for me because it was very, like I mentioned, it was extremely difficult. But having said that, there is one person in your life who will always push you to become better. And like in this film, you see the Kittu is the driving force for Arjun, to get what he really wants, which you would see in the film. I would really like to thank my father because he's someone who really inspired me to be not just a better human, but a better actress. That was absolutely lovely. Thank you so much, Mrinal. ओके सो प्रीति या फ्रॉम फर्स्ट इंडिया फिल्मी मेरा सवाल आप सबसे है कि इस मूवी से क्या कुछ इंस्पिरेशन मिली है या फिर क्या कुछ मोटिवेशन मिली है आप सबको. So, like मैंने पहले भी कहा, हमारे ज़िंदगी में वो एक इंसान हमेशा होता है जो हमें पुश करता है. कई बार हमें हमारे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता जो हमारे करियर चॉइसेस है. आई एम श्योर इस रूम में काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे, उनको अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला होगा. इट डजेंट मीन दैट यू डोंट लव योर फैमिली. वी ऑल आर परमिशन, लाइक आई एम अ परमिशन चाइल्ड. जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलती है मैं 100% नहीं कर पाऊँगी. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस फिल्म हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड मी मैं आपको बताऊंगी. जो लास्ट फिल्म जिसने मुझे मेरा करियर चेंज हो गया. मैं बीडीएस करने वाली थी, डेंटिस्ट बनने वाली थी, मैं शायद आपको क्लिनिक में मिलती, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ. वो है 3 इडियट्स. क्योंकि उस फिल्म में मुझे ये सिखाया कि आप अपने दिल की सुनो. वैसे ही अगर जब मैंने यही कहा कि मुझे किसी भी मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म ने दिस समथिंग विद इन मी मूव्ड. क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ों की शुरुआत तो हम कर देते हैं पर ख़त्म नहीं करते, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि कोई कंडीशंस होती है, सपोर्ट नहीं मिलता. तो इस फिल्म में ज़रूर आप देखेंगे कि किस तरह से अर्जुन तलवार वापस वो अपनी जर्नी शुरू करता है. उसी तरह से मैंने भी अपनी जर्नी वापस शुरू की थी 2-3 साल टीवी के छोड़ने के बाद. सो फॉर मी कहीं ना कहीं मैं अर्जुन को अपने आप को वहाँ पर देखती हूँ, मैं बुलबुल को वहाँ देखती हूँ, मैं काफ सोनिया को वहाँ देखती हूँ कि देयर इज़ दैट वन थिंग which will always be around you, a person, your friend, your teacher, your child, your grandma, your friend, whoever that be. मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब आप ये फिल्म देखेंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो प्लीज़ एक फ़ोन उस इंसान को ज़रूर करना और कहना कि थैंक यू. टुडे
क्योंकि जब मैंने फिल्म देखी दिसंबर में, तो मैंने अपने डैड को बोला कि डैड, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. पूरी दुनिया मेरे एक्ट्रेस बनने के खिलाफ थी, लेकिन आज मैं उन सारी फिल्मों का हिस्सा बन रही हूँ. बाकायदा जर्सी एक ऐसी फिल्म जो आपके अंदर का जो पैशन था, वो जिस भी कारण बुझ गया हो, वो इट विल इग्नाइट द फायर विद इन यू. दैट्स व्हाट दिस फिल्म हैज डन टू मी. A very big film, KGF Chapter 2 is coming. Very big in terms of scale. You all might be bigger than that also. One doesn't know. One will know on 14th April. So, Gautam, beginning with you, how difficult was it to accept that you will be known as the underdog till the day of release? How difficult was it to plan your release on 14th April? Because the moment Lal Singh Chadda shifted, Right. I got a call from him that, we are coming on 14th. So, was it a difficult decision or it wasn't? So the way I see it, I mean, there are a lot of well-wishers and a lot of friends who call me and ask me, I mean, KGF is coming, it's such a big film. Probably you shouldn't be coming on the same day. The way I see it, sir, I think good film always finds its way to the audience, and we are very confident about our product. And I don't see it as. Yeah, thank you so much, sir. I don't see it as KGF versus Jersey. I see it as KGF and Jersey, because I think both the films have enough space. And I mean, the pandemic has done a lot of bad things, but if I can say one good thing, I mean, it brought us the entire fraternity and industry together. Every Friday, we want every film to work, and the same way I want KGF to work, because, yeah, because we are so happy. Gangubai worked, Triple R worked, Kashmir Files worked, and we want KGF to work, and we want Jersey to work. So yeah, I think we have enough space for both the films to work, and the audience get a better option. So we're happy for that. Yeah. Thank you. Well, I'm so happy to meet you, first of all. Thank you, so am I. Sir, honestly, this week is so like the release week is so crucial, because Jersey is coming, KGF is coming, and I think we all are spoiled for choices. It's a human drama. You'll see this lovely journey of Arjun Talwar. At the same time, you'll see KGF Chapter 2, which we all have been excited and waiting. So I think I'm the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day, like back-to-back shows. So guys, I mean, I'm very excited for the film to come out, first of all, because it's my best. Like, according to me, I feel like I'm really proud of this film. And second of all, it's coming out in theaters. Bollywood is coming. We need to stand together. We need to celebrate each and every film. This story deserves to reach out to the wider audience, and I'm just happy for it to be coming out in theaters. So, Great. yeah. Great. So my question, hi Shatma, this side from Home Bollywood. My question is from Mrunal. So जैसे कि शाहिद ने बोला कि मृणाल तो ऑलरेडी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है. वेल, कितनी बार ऐसा हुआ है कि शाहिद आपकी तारीफ करते गए हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान. एंड शाहिद, आपसे एक सवाल ये है कि एक सीन है फिल्म के अंदर जहाँ पे यू आर हगिंग योर डैड. बहुत ही इमोशनल सीन ऐसे हमें देखने के लिए मिल रहा है. बट व्हाट वाज योर थॉट व्हाइल शूटिंग दैट पर्टिकुलर सीन? इमोशनली क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब आप वो सीन शूट कर रहे थे तब? Before I answer, can I hug you? Thank you for asking me that question. The first week of Jersey was very difficult, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ होता था. मुझे याद है, अमन के साथ मैं बैठी थी अपने रूम में और मैं रो रही थी. मुझसे नहीं होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है. और सेट पर जब मैं जाती थी, जब हम अपने रिहर्सल्स करते थे, यहाँ पर अनिल सर नहीं है जो हमारे डीओपी है. मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि अनिल सर, शाहिद, अमन एंड गौतम सर, ये पांचों, they all are like my pillars. And coming from them, when they say, Mrunal, you can do it, it just makes you feel good कि हाँ यार, मैं कर सकूँगी.
एंड जो भी आप देखोगे 14 अप्रैल को वो बोलेगा. But having said that, I'm really blessed to be working with Shahid. It was my dream. It's a dream come true. And I'm sure you all the girls are jealous out there. But मैं बहुत उनकी बड़ी fan रह चुकी हूँ. I've told him multiple times and I will never ever get tired of how wonderful, how focused and how secure actor he is. His performance is just, this performance, it blew my mind. And I'm the lucky one to be witnessing this behind the screens as well. And you know, बहुत वक्त लगता है केमिस्ट्री बिल्डअप होने के लिए, लेकिन कभी भी शायद ने मुझे ये फील नहीं होने दिया दैट यू नो I've just started my career. He always treated me like a family and I'm really happy to have him as a friend as well. My girlfriend loves Shahid more than me. A guy actually left me because I was doing a film with Shahid. He's like मैं कर लेता हूँ. अंकल मुझे लगा आप सो गए थे, मालूम है आप कैमरा रख के जो मस्त एकदम ऐसे थे आप, मैं 3-4 बार देखा कि अंकल सो गए क्या. आप 8 बजे निकले सुबह में. सर मैं 7 बजे उठता हूँ सर, 6 बजे, कभी 5 बजे. मैडम इधर देखिए, लुक अभी ये सेंटर में देखिए, सेंटर इधर देखिए मैडम जी, इधर लुक